Let's dive into the student visa process. There are short-term visa up to 90 days and long-term visa more than 90 days. For international students are required to apply for a student visa at their nearest embassy or consulate. The processing time of Czech Republic student visa is 60 days. And student advice, is my advice also, apply for the visa in advance. Students who are planning to stay in Czech Republic for more than 90 days or more than a year will be also need a resident permit for the study purpose. So you have to apply at least 2 to 3 months before. The processing time is like 60 days ban jata hai. Visa fees is 2,500 konar. जो local fees है you will convert into the dollar जो भी आपका बनेगा. Study and work in Czech Republic. Yes, students are allowed part-time during 20 hours per week during their study, and summer holidays में they can do the full-time job as जो एक universal mechanism बना हुआ है. The student can stay back in Czech Republic after completing their degree and they are eligible for 1 year work permit in Czech Republic once they are graduate from a university. However, non-EU students are advised to look for a permanent job in Czech Republic before their program ends with the university. The student can apply for higher level of study such as opting for a master's program. After the bachelor's program, a student need to prove that they have a secure permanent employment which is the best suited according to their qualification and the location of the job. Then they can stay for longer and otherwise won't. And for the visa, as you can see on my screen, this is the useful link. This is the portal for Czech Republic University. You आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने ये लिंक मेंशन किया हुआ है. As soon as you click on the link, you have the access of the portal where all Czech Republic universities programs were available with discipline, with video instruction. Everything will be mentioned there. It will be very easy for you to search the university with the help of this portal, and this portal is owned by or operated by the local government or the government of the Czech Republic. How you can avail the appointments? Appointments are needed for the most of the consulate service and submission of the visa application. To book an appointment, request should be sent by email to a dedicated address. All other correspondence, including queries regarding the appointment, should be addressed to, as you can see on my screen, islamabad.consulate@mzg.gov.cz. ये तो मैं पाकिस्तान की इस्लामाबाद की बता रहा हूँ. अदर कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं, they can check on the embassy website where they can send the email. Required requirement and supporting documents, application form with the applicant signature, a valid passport, minimum 2 blank page, valid at least 3 months after returning to Pakistan or Afghanistan. 2 color photograph, 3.5 by 4.5 cm format, white background. Application fees, which I have already mentioned, 2,500 konar. A consent of parents or legal guardian if applicant is minor, it's like under 18 hai, they need it. A proof of purpose, varying depending on the according to the purpose, like why, okay, a proof of purpose and why you are applying or what was the reason. A letter of admission to study program according to 64 of Act number 3260999 और marriage certificate और birth certificate आपको provide करना होता है with this proof. और a proof of the stay of family purpose, जिसमें मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये मस्ट बी ऑलरेडी लीगलाइज फॉर इंटरनेशनल यूज. लीगलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है. ऑलरेडी हैव नेशनल लीगलाइजेशन सर्टिफिकेट अपीयर्ड बाय द Czech Republic Embassy or Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. तो ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस आपने ये अपनी लीगलाइजेशन वगैरह करवा लेनी है ताकि आपकी लीगलाइज डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकें एट द टाइम ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट, अदरवाइज आपके नहीं एक्सेप्ट होंगे. तो आपको Czech Republic Embassy में सबमिट करना है. ईमेल मैंने बता दिया है, या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपने उसको करवाना है टेस्ट. Proof of accommodation for the entire state in the territory of Czech Republic where you are going to stay. Confirmation of natural or legal person with an official verified signature, original or copied or certified copy of accommodation contract
और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ मैंडेटरी कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन को बुक करें। अगर आप प्राइवेट भी बुक कर रहे हैं तो वेरीफाइड सिग्नेचर होंगे, आपको सर्टिफाइड कॉपी अगर आप ले रहे हैं, अदरवाइज ओरिजिनल आपको देना है, ओरिजिनल नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी आप अकोमोडेशन देंगे। ये दिस इज़ द वीज़ा रिक्वायरमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट अकोमोडेशन कंफर्मेशन टेरिटरी, जिस टेरिटरी में आप जा रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उसी टेरिटरी में आपको जो है वो बुक करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरी लोकेशन पे अकोमोडेशन नहीं दे सकते। आप प्रूफ ऑफ फंड्स, बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 6 मंथ पीरियड। इंटरनेशनल स्टूडेंट डेबिट कार्ड भी अगर आप शो करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसमें आपकी स्टेटमेंट वगैरह आप मेंशन करने देंगे। एटलीस्ट 6 महीने की मेंटेन स्टेटमेंट आप मैनेज करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ पुलिस क्रिमिनल रजिस्टर प्रोवाइड या पुलिस क्रिमिनल रजिस्टर सर्टिफिकेट ट्रांसलेट इनटू चेक लैंग्वेज। तो इसको अपने चेक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट भी करवाना है, जिसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं। वो आपने सबमिट करना है और लैंग्वेज में ट्रांसफर होना चाहिए। According to their requirement, you have to provide last 3 years traveling record in any country overall where you have stayed more than 6 months. अगर आप किसी कंट्री में रहे हैं तो you have to provide all the details in which country you have been to, what's the purpose and why on which visa status you have stayed actually। और जो है ये इसके अलावा इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एफिडेविट के थ्रू। अगर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी कंट्री के अंदर तो आप एफिडेविट के थ्रू भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में या इंडिया में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बड़ा इजीली मिल जाता है। अफगान नेशनल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ सबमिट द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अफगान क्रिमिनल रजिस्ट्रार, कि उनको एग्जेम्पशन है, लेकिन पाकिस्तान को जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है। अफगान ईजी है टू गो, उनको नहीं नीड है, और इट मस्ट बी रिप्लेस बाय एन एफिडेविट इन इंग्लिश और चेक लैंग्वेज। इंग्लिश में हो या चेक लैंग्वेज में हो, दोनों में आपको देना है और वो आप जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ एम्बेसी अ डॉक्यूमेंट प्रूविंग द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सेट आउट इन द मेजर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इलनेस। तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो आपको अपना करना है कि आपके पास कोई ऐसी हेल्थ में इश्यूज़ नहीं है, कोई ऐसी इलनेस नहीं है जो इन्फेक्शन का रीज़न बने या स्प्रेडिंग का बने। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपने देना होता है ऑन पॉजिटिव डिसीजन की बेसिस। तो एट द टाइम ऑफ वीज़ा आपको बेसिकली नहीं सबमिट करना होता अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, बट इट मैंडेटरी कि आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेना होता है, एम्बेसी में सबमिट करते हैं व्हेन द एम्बेसी कॉल यू फॉर द वीज़ा, कि आप अपना वीज़ा क्लियरेंस हो गई और आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें, देन यू हैव टू सबमिट। और एम्बेसी कैन रिक्वेस्ट एनी डॉक्यूमेंट और एडिशनल डॉक्यूमेंट एट एनी टाइम इफ दे नीड इट। जो भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट कर रहे हैं उन सब की आप फोटो कॉपीज़ जो है वो ट्रू कॉपीज जो है लाजमी बनाएं और 2 कॉपीज़ के साथ अपने ओरिजिनल के साथ लेके जाएं। जो वीज़ा फीस है अगेन रिपीट कर रहा हूँ 2500 कोनार है, जो स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट को एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन एम्बेसी में सबमिट करनी होती है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन ऑल डिटेल्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरी प्लीज लीव अ कमेंट बिलो। लाइक ऑलवेज, हैप्पी लर्निंग फ्रॉम माई साइड।